story of keeping your word and helping your friends in need. Antonio, I have a great news. I have fallen in love with someone. Her name is Portia. She is the most beautiful girl in the world. And not only that, she is rich too. Her father has passed away recently and she is going to have a lot of money. That's wonderful news, Bassanio. But does she love you as much as you love her? Of course, she does. When she looks in my eyes, her eyes are full of love and respect. Listen, I want to buy some gifts for her. The only problem is that I have no money. I know I owe you a lot of money, but please, can I borrow a little more? I promise I will pay you back. Bassanio, you know that my money is your money and gladly lend it to you anytime. But the problem is that I have spent all my money on merchandises. How can I help you now? What should I do? Don't worry, you can borrow money from a moneylender named Shylock. He always has money in hand. He will certainly lend you money if I sign a bond with him. And I expect return of my ship any day from now. I'll then repay him back. Thank you, Antonio. You really are a good friend. Bassanio, come along and let's enjoy. Hey Shylock, are you going to lend us money? Antonio, do you remember all those times when you insulted me in a loud voice that everyone could hear? You once banged on me and called me a dog. But I was quiet because Jews are good at suffering. But now it looks like you need my help. Do not lend me money as you would to a friend, rather as to an enemy, so that if I fail, you may accept the penalty. Look at your anger. Okay, I will give you all the money you want and won't charge even single amount of interest. But one thing I am worried about is, what if you won't pay me back? Don't worry, I'll pay you back the money soon. No, 3,000 ducats is a lot of amount. I need some kind of guarantee. I will charge a pound of your flesh if you won't pay me back on time. Okay, I'll sign the bond and I promise I'll agree to its terms. No, you won't sign such a bond for me. I will rather go without money. Why? Fear not, man. Don't forfeit it. Within these 3 months, that's a month before this bond expires, I expect return of my ships and thrice times the value of this bond. I'll then repay him back. Now make your choice, Lord Bassanio. A golden, a silver, and a plain lead casket.
The things which are most beautiful outside are often the ugliest within. I choose the plain lead casket. What is this I have found? Fair Portia's portrait. Oh, Bassanio, I'm the luckiest woman in the world. Now, from this moment, I give my mansion, my servants, and myself to you. I give them along with this ring. If you ever part with it, or lose it, or give it away, let that be a sign that your love for me is dead, and I may accuse you of that. My sweet lady, may this ring leave my finger only because my life has left me. Then you may venture safely to say that Bassanio is dead. Come, let's celebrate. Dancing bears, painted wings, things I almost remember, and a song someone sings once upon a December. Someone holds me safe and warm, horses prance through a silver storm. A messenger has arrived from Venice, my lord. This is a letter from your friend Antonio. Dear Bassanio, my ships have all sunk. I'm in big trouble. Shylock wants to take a pound of flesh from me. I'm going to die. Please come to my trial and execution. I want to see you once more. Your friend Antonio. Bassanio, you are my husband now. Go to your friend right away. Pay him 20 times the original loan and tear up the bond. I'll make arrangements for you to go. What makes the world go round? It isn't gold or green to make the world go round. Love is all you need. Money can buy many things to help you live in style, but jewels can't make you happy, and gold can't make you smile. This letter from Valerio doth commend, a young and learned lawyer to a court. His name is Balthazar. Where is he? Go, give him the courteous conduct to this place. Now begin the proceedings. Be merciful, Shylock. Why should I be merciful? Mercy is twice blessed. It blesses him who gives and him who receives. Mercy is like a gentle rain. It falls from heaven and blesses everyone. God himself is known to be full of gentleness and mercy. Therefore, Shylock, be merciful. Take 3 times the sum and let me tear up the bond. No, I only want the fulfillment of my bond. It is clearly mentioned in that a pound of Antonio's flesh will be mine if he won't pay me back on time. I only want justice. Do you agree to the terms in the bond? Yes, I do. The money wasn't paid back, Antonio. You must get ready to die then. Do you have anything to say before you die? No, I'm ready to die. Goodbye, my friend. Don't blame yourself for my death. Oh, Antonio, I'm so sorry. You are the best friend in the world. Enough of this. Let's go. Is there a scale to weigh the flesh
I have it ready. Is the physician here? But the bond says nothing about a physician. All right, a pound of flesh is yours. The law allows it, the court awards it. You are a good lawyer. You understand justice. Just a minute. This bond doesn't give you a drop of blood. The words expressly specify a pound of flesh. If Antonio loses a drop of blood, you will break the bond. Do you understand? In that case, where is my money then? Here it is. Not so fast. You have already refused the money. You shall have the justice, but nothing else. You, Shylock, are a Jew. According to the law of Venice, who is not himself a citizen of Venice, tries to take life of a citizen, he must be put to the death, and his money and property must be shared equally between the state and the man he has tried to kill. The Duke will decide your punishment. In the spirit of mercy, I forgive you, Shylock. I will spare your life, but you must give half of your wealth to Antonio and the other half to the city of Venice. What would a moneylender do without his money? Take my life as well. What mercy can you offer him, Antonio? Let him keep my share of wealth and be merciful to others in future. Are you contented, Shylock? I am not feeling well. Send me the bond. I will sign it. And please let me go. I have never seen such a clever lawyer in my life. Antonio, you should pay this young and clever lawyer a handsome reward. The court is adjourned. Please accept this money. Give me this ring. I shall have nothing else. My wedding ring. I'm so sorry. I have promised my wife that I would never take it off. I will buy you the most expensive ring in Venice, but not this one. Please understand. Bassanio, give him the ring. I owe him my life. Just think about what this lawyer has done for us today. Don't you think that's what your wedding ring? Please accept this ring as a token of our love and gratitude. Thank you, gentlemen. God bless you. My sweet lady, pardon this fault that I have committed, and I swear by my very soul that I shall never break a promise to you again. Bassanio, you are to blame for having so lightly given away my first gift to you. You shall have felt it your duty to keep it. I swear I shall never speak to you until I see that ring again. It is my misfortune to have been the cause of this war. I swear, Bassanio will never again break a promise to you. Then give him this ring and tell him to take better care of it than he did before. Bassanio, promise to keep this ring always with you. By heaven, it is the very same ring that I gave to the lawyer in Venice. Are you all amazed? Were you actually the lawyer and I didn't recognize? Oh sweet Persia, you are the cleverest woman in the whole Italy. You have saved my best friend's life. I am too surprised to speak. Antonio, you are welcome. I have a better news for you than you expect. 3 of your ships have arrived safely in harbor and your money is safe. Praise the Lord. Yes, the Lord is gracious and compassionate. The quality of mercy is not slain. Drop it as a gentle rain from heaven upon the place beneath. Twice blessed. Yes,
conversation, and cross-dressing are just a few to mention. Disguise is one of the most frequently used tools that he beautifully uses and allows Shakespeare to compile it and multi-layer his comedies, making them deeper and more interesting before delivering the surprising solutions of the antics. Mr. Pankaj Gaurji, our Honourable Manager, sir, Dr. S.P.Singh ji, respected Principal ma'am, amazing teachers, beautiful students and wonderful guardians. I would like to welcome you all to this annual concert of LPS Sitapur after such a long break of this pandemic. I believe this is the first set of gathering that we are having today with all of you at one place in this beautifully made auditorium. And as you must have noticed, these wonderful changes that the entire LPS family has gone through. So, there's one thing that I would like to say and add here, is that when we mention and we talk about teachings or education, so I believe that the first set of teachers that any child can get are his or her parents. And in fact, I would like to quote this line of our director Garima ji. She couldn't be here today due to some work, but in this the last Teachers' Day that we had, where she mentioned very beautifully that the very first persons that she wished Happy Teachers' Day was her parents. That is, of course, Dr. S.P.Singh and Mrs. Kanti Singh. So why do I want to mention this here? We all saw many programs here which related a lot with the relationship of parents, students and teachers. So this is not actually a triangle. You see, the parents, the teachers and the students. All this is one family. So this is a very important fact that I would really want all of us to realize, that whatever
the school does or whatever you do, it all counts. And it also matters when we don't do some things. कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं किसी न किसी के पार्ट पे, जिसका असल में प्रभाव बच्चों पर ही पड़ता है। मैं गार्जियन नहीं हूँ, मगर हाल ही में कुछ सेशंस मैंने ऐसे लिए हैं अपने ही पूरे एलपीएस परिवार के स्टूडेंट्स के साथ। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स और ऐसे अचीवमेंट्स भी समझने को मिले हैं। तो अचीवमेंट्स की बातें बहुत होती हैं और करनी भी चाहिए, मगर जहाँ प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी ढूंढने चाहिए, ब्लेम नहीं करना चाहिए। आज के समय में ये सोशल मीडिया का ज़माना है और ये कही जाती है कि ये एज ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, और इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि हम सब लोग कंफ्यूज हुए जा रहे हैं, सही कौन सी है और गलत कौन सी है। असल में हम सबको पता है, हम लोगों ने यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स देखे, महाभारत का एक्ट देखा और मर्चेंट ऑफ वेनिस का भी एक्ट देखा, तो हमने कुछ ना कुछ जाना, सीखा, समझा, और वो कुछ भी नया नहीं था। हम सब जानते हैं, मगर इन्फॉर्मेशन के अबंडेंस की वजह से कंफ्यूज हुए जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम सब लोग अपने अंदर ज़रूर झांकें, समय दें किसी दूसरे से पहले खुद को। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं इस मोबाइल फ़ोन से मैंने कुछ अभी बैठे बैठे पॉइंट्स बनाए थे, तो उन्हीं को देख के ही मैं बात कर रहा हूँ, मगर मैं इस मोबाइल फ़ोन का गुलाम नहीं हूँ। मैं ये गुलामी शब्द क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हाँ, टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ्स में इस तरह से आ गई है कि हम हर जगह उस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। शायद होने की ज़रूरत भी है, मगर उसकी गुलामी की ज़रूरत नहीं है। उठते बैठते खाते पीते हमें बात भी करने की ज़रूरत है। बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा, मगर फिर भी ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि खुद को समय दें। आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं, जो उथल पुथल है, उसको भी समझें। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे कुछ वैल्यूज़ हम अपने बच्चों में इम्पार्ट करें। और स्कूल, लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस इस चीज़ का हर संभव प्रयास करते हैं कि ऐसी वैल्यूज़ बच्चों में आएँ। ज़िंदगी बहुत भाग दौड़ भरी हो गई है, मगर फिर भी अगर शॉपिंग के लिए समय निकाला जा सकता है, मूवीज़ देखने के लिए समय निकाला जा सकता है, अत्यंत महंगे बर्गर्स खाने के लिए पैसे निकाले जा सकते हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ों के लिए भी समय और पैसे दोनों निकाले जा सकते हैं। मैं खैर आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस समारोह का आप लोग खूब आनंद उठाएं, और कुछ जो सबक आज यहाँ के बच्चों ने हमको देने के प्रयास किए हैं, यहाँ के टीचर्स ने जो प्रयास किए हैं, उनकी आप सराहना करें। और मैं स्पेशल मेंशन असल में हमारे जो आज के एंकर्स हैं, मुझे नाम तो नहीं पता, मगर मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इन हमारे एंकर्स के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां बजाएं। वो इसलिए क्योंकि इतनी अच्छी प्रिपरेशन, जाहिर सी बात है टीचर्स का प्रयास है, मगर ये उत्साहवर्धन करना उतना ही ज़रूरी है। और इस पूरे समारोह में 4 चांद लगा रहे हैं हमारे एंकर्स। और मैं सुबह से हूँ यहाँ पे, और कुछ प्रोग्राम्स रिपीट हुए हैं, और अभी तक जिन बच्चों ने दोबारा भी परफॉर्म किया है, उनकी एनर्जी लेवल में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है, और उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो मैं
उन सबको बधाई देना चाहता हूँ और हमारे गार्जियंस को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो इस LPS परिवार से जुड़े हैं और LPS परिवार का ये विज़न है, डॉक्टर S.P. सिंह जी का ये विज़न है कि एक्सीलेंस फॉर ऑल, एक्सीलेंस फ्रॉम ऑल। इस चीज़ को हम ना सिर्फ कहते हैं, बोलते हैं, बल्कि अपने वैल्यूज़ में उतारते हैं। तो ये एक्सीलेंस फॉर ऑल, एक्सीलेंस फ्रॉम ऑल और ज्ञानात् लभते सर्वम की ज्ञान से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस विज़न के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी चीज़ को आप सब से निवेदन करते हैं कि इस मैसेज को आगे पहुंचाएं और LPS परिवार को आगे बढ़ाएं और ऐसे ही आपके बच्चे हमेशा सफल होते रहें जैसे कि इस शाखा के बच्चे सफल हैं। और इस पूरे LPS मैनेजमेंट की आप सबको इस बात की शुभकामनाएं हैं। इसी बात पे मैं अपनी वाणी को उड़ान दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय LPS। Thank you so much, sir, for your kind words. Now, for proceeding the program, I would love to hand over the mic to my seniors. Thank you so much, Arushi. अरे अरे रुकिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अरे अरे रुकिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। क्या आपको भी लग रही है नींद? अभी तो आप सबके होश उड़ाने बाकी हैं। अरे अरे रुकिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। क्या आपको भी लग रही है नींद? अभी तो आप सबके होश उड़ाने बाकी है। So ladies and gentlemen, are you ready for a fantastic performance? The next genre of dance has always been known to move your feet, and its only intro will make your body bounce. Its brief introduction will give you from where it has originated. The state famous for production of wheat. The state famous for its golden temple. The state famous for Lahori. The state famous for its pagadi. The state famous for 5 rivers. Yes, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग। पंजाबी दा डांस स्टेज दे लगा देनी आग। ओपरा, तुसी तैयार हो जा for the next performance. So audience, please tie your seats. Hold your heart for the beats of Dhol Jagiroda, the moves of Bhangra and mind-dazzling bass. Now it's time to go to another level. Level that understands no boundary. Level that will take you another aura full of Punjabi dhol and beats. This performance is nothing but just like a Tere Mere, the most tadakta, bhadakta and chatpada performance. So ladies and gentlemen, are you ready for the bingo? So please put your hands together for the thunderstorming and balle balle wala moves, our Punjabi dance. Available on iTunes. Come on audience, you can also join this. Come on audience, cheer up for this!
Available on iTunes. भाई ताली तो बजती है यार, ताली बजा दो। बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। Available on iTunes. बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, बल्ले बल्ले। Available on iTunes. What an amazing performance that was. Amazing, amazing, and amazing. Boost your energy. सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साडी अखियां ने है सपने अंबरां दे ए सपने अंबरां दे बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल दूर दूर बह जाएंगे फिर ना समंदरा दे फिर ना समंदरा दे ऐसे खड़े है जाना पड़े Same, I could see the kind of feeling on your faces. It is a great
Indeed, I am feeling immense pleasure to address you all on this auspicious, the first and very first alumni meet of LPS Sitapur branch. This is just simply to make you to realize the importance of school life. Almost I studied here for 8 years और इसे छोड़ना was like I came to principal ma'am and said ma'am I just can't because I left school in 11th. So at that time I was thinking नहीं मुझे LPS नहीं छोड़ना, इतनी strong memories थी इस स्कूल से. लेकिन उनका अपना बेटा जो इसी मंच से कुछ ही मिनट में आपकी पूरे कार्यक्रम की, आप लोगों की सबकी समीक्षा उन्होंने की बड़ी बारीकी से, ये साबित करता है कि वो बहुत बड़ी सोच रखते हैं, आगे और भी करने का उनका इरादा है. देखिए मुझे भी 27 साल हो गए, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुझे अनुभव है. बहुत सारे स्कूल में जाता हूँ सीतापुर के, लेकिन ऐसा मंच कहीं नहीं है. जो ये ऑडिटोरियम आपने उपलब्ध कराया है ये मंच नहीं है. इन बच्चों की प्रतिभा तभी निखरेगी जब ऐसा मंच मिलेगा. और यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रिंसिपल वाकई में काबिले तारीफ़ हैं. आप लोगों का प्रदर्शन हम पुलिस लाइन में भी देखते हैं. 26 जनवरी को ये स्कूल फर्स्ट आना ही है. जब मैं बैठा होता हूँ किसी मुख्य अतिथि के पास, तो मैं कहता हूँ, पहले से बता देता हूँ रिजल्ट कि LPS के बच्चे फर्स्ट आएंगे. तो वो कहते हैं कैसे? मैंने कहा बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ. और वाकई में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और उम्मीद करूँगा अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहिए जहाँ पर वाकई में विद्या का ज्ञान उन्हें कराया जाता है, उन्हें संस्कार युक्त बनाया जाता है. आज बहुत सारे नाटकों ने हम सबको खुशी तो दी ही, कहीं ना कहीं झकझोरा भी. जो कुछ समाज में हो रहा है उसको आपने बहुत बारीकी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत किया. और वो बच्चे बहुत ही काबिले तारीफ़ हैं. और जो इस मंच को संचालित कर रहे थे, उनके अंदर जो ऊर्जा देखने को मिल रही थी वो भी काबिले तारीफ़ हैं. ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा. बहुत बहुत धन्यवाद. मेरी एक 3 साल की बेटी है. प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए पंकज सर के लिए. Thank you, sir, for being a part of this auspicious occasion. Thank you so much, sir. Everybody, please share a huge round of applause. Hello. This is the grand finale for today's night. I know, audience, आप सभी का दिल अभी और परफॉर्मेंस देखने का कर रहा होगा. But
I assure you that this combo of performance by the LPS family will fill your this demand also. Ladies and gentlemen, ये LPS है जहां लोगों के विचारों व मांगों का सम्मान किया जाता है. इसके अतिरिक्त we feel immense proud on our school LPS Sitapur that has always provided the best opportunity for exploration, innovations, humanitarian approach and holistic development. जी हाँ, ये अभी की कहानी नहीं बल्कि ये तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन हमारे ऑनरेबल मैनेजर सर मिस्टर S.P.Singh ने इसकी स्थापना 2009 में की थी. तो आइए हम सभी मिलकर ग्रैंड फिनाले की शान व मान बढ़ाते हैं. तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए ग्रैंड फिनाले का. We are summing up together. Please put your hands in the air, everybody.
वर्षों की मेहनत का ये सुंदर परिणाम है। जिधर भी देखो लखनऊ पब्लिक कॉलेज का ही नाम है। जिधर भी देखो लखनऊ पब्लिक कॉलेज का ही नाम है। कठिन परिश्रम दृढ़ संकल्प का